Can the right diet give you glass skin? Well, yes it can, and in today's video we're going to talk about it. Hello and welcome to Skincare Simplified. My name is Nipun, your skincare bestie, now a certified skincare consultant, and today's video is in a different setup. हम मेरे किचन में हैं क्योंकि मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक हेल्दी डाइट, एक न्यूट्रिशन प्लान और जनरली इसे कह सकते हैं छोटे-छोटे लाइफस्टाइल चेंजेस that you can make in your daily life that is going to give you not just great skin but great health. Before we get started, you know about it. Do the thing, like the video, subscribe to my channel, hit the notification bell, and if you enjoy skincare, hair care, beauty related content, you will enjoy this channel, I promise you. So go ahead, hit the subscribe button before we get started. Now, I'm assuming you've all done that. Now we're gonna dive straight into the video. What is a healthy diet or what is a good diet comprised of? Now, for every human being to survive, you basically need three components: protein, carbohydrates, and fibers. In addition to that, yes, you need vitamins, you need minerals, you need all of these other things. But rozmarra ki life mein, especially for all the ladies who have children, who are going to work, stay-at-home moms, not stay-at-home moms, whatever it may be, women tend to get very busy. एंड उस वजह से आप अपनी हेल्थ को काफी इग्नोर करते हैं. काफी केसेस में मैंने देखा है दैट वुमेन डोंट इवन कुक फॉर देम सेपरेटली. यू नो, जो सबके लिए बनता है, जो सबको पसंद होता है, वही सब खा लेते हैं. एंड मे बी दैट्स नॉट द हेल्दीएस्ट ऑप्शन फॉर व्हाट योर बॉडी नीड्स. सो आज मैं आपको बताऊंगी एक सिंपल तरीका जिससे मैं हेल्दी हैबिट्स को अपने लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट करती हूँ. यहाँ कोई वेट लॉस टिप्स नहीं होने वाले. मुझे कोई वेट लॉस के बारे में पता नहीं है. हैविंग सेड दैट, आई एम द डाइटर ऑफ द सेंचुरी. दुनिया की कोई भी डाइट बता दे, मैंने ट्राई करी है, बट आई डोंट डू दैट एनी मोर. आई वर्क आउट 3 to 4 times a week. आई ईट हेल्दी एंड दैट इज हाउ आई एम ट्राइंग टू लुक एंड फील माई बेस्ट. तो टोटके नहीं है मेरे पास, बट हेल्दी लाइफस्टाइल. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो मेरे दिन की शुरुआत होती है कॉफी से. जिस तरह की कॉफी मैं लेती हूँ वो है ग्राउंड कॉफी. सो ये बेसिकली कॉफी बीन्स का पाउडर होता है जो इस तरह के डिकैंटर में, इसके नीचे भी एक मशीन होती है, इस पे गैस पे बनाई जाती है. इस कॉफी में कोई मैं चीनी ऐड नहीं करती, कुछ नहीं ऐड करती, बट मिल्क ऐड करती हूँ, बहुत थोड़ा सा. द मिल्क आई यूज इज बेसिकली किसी भी ब्रांड का. अभी ये ऑर्गेनिक लैक्टोज फ्री मिल्क मैं यूज कर रही हूँ. ऑर्गेनिक, सपोज टू बी गुड. लैक्टोज फ्री क्यों? क्या मैं इंटॉलरेंट हूँ? नहीं. मेरे को दूध, रेगुलर गाय का, भैंस का दूध बहुत पसंद है, लेकिन बिकॉज आई हैड अ लिटिल बिट ऑफ एन एक्ने इशू लास्ट कपल ऑफ मंथ्स, आई जस्ट स्विच टू लैक्टोज फ्री एंड दैट इज हेल्पिंग माई एक्ने सिचुएशन. सो बेसिकली दिस इज व्हाट आई स्टार्ट माई डे विद, अ रियली बिग ग्लास ऑफ कॉफी. उसके अलावा मैं पूरे दिन में चाय, कॉफी, इस तरह की कोई चीज नहीं लेती. इफ आई एम रियली क्रेविंग समथिंग, आई विल जस्ट हैव ग्रीन टी. अब क्विकली आते हैं ब्रेकफास्ट में. जो 3 कंपोनेंट्स होते हैं, प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट्स, अब इन तीनों को आप ब्रेकफास्ट में कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं? बहुत सिंपल तरीका है, मैं आपको बताती हूँ एंड यू विल बी शॉक्ड विद दिस. मेरा ब्रेकफास्ट कुछ ऐसा होता है जिसपे बिल्कुल टाइम नहीं लगता. इट इज 1 boiled egg जो 10 मिनट में उबल जाता है. मैं इसका येलो पार्ट निकाल के, आई जस्ट हैव द व्हाइट, सो आई हैव 1 egg एंड देन द पावर हाउस, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, एक रात पहले की पुरानी स्टेल रोटी. बई रोटी कहते हैं इसे पंजाबी में, बासी रोटी कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में से कहते हैं स्टेल रोटी. दिस इज अ पावर हाउस ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स. सिर्फ ये याद रखना है कि जो आपकी रोटी है वो 15 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए. सो अगर आपने रात को 8-9 बजे रोटी बनाई और आपने सुबह खा ली 12 घंटे के विदिन, इट इज विदिन द 15-hour metric and this has a lot of health benefits. This is something that Indian people have been doing for years. I remember my nani doing it. I remember my mother doing it. ये रोज का नाश्ता नहीं होता, पर जिस दिन रोटी बनती है रात को, एक एक्स्ट्रा बना के मैं नेक्स्ट डे के लिए रख लेती हूँ. This helps blood pressure, gut health. Somehow I feel skin भी अच्छा रहता है एंड खाने में बुरी भी नहीं लगती है. So it is a very simple breakfast. जब रोटी नहीं होती, I have 1 slice of bread. ब्राउन ब्रेड नहीं, नॉर्मल वाइट मिल्क ब्रेड, क्योंकि कैलोरी डिफरेंस बहुत कम है एंड मोस्ट ब्राउन ब्रेड्स में ब्राउन कलर लाने के लिए वो कैरामल का एक्सट्रैक्ट यूज करते हैं, विच इज एक्चुअली क्वाइट अनहेल्दी. इसके बारे में बहुत सारी वीडियोस हैं, आप देख लीजिएगा यूट्यूब में. सो दिस इज अ सिंपल ब्रेकफास्ट. आई हैव 1 egg दैट गिव्स मी प्रोटीन. अदरवाइज पनीर, कुछ भी इस तरह का प्रोटीन होता है. यू जस्ट नीड वेरी लिटिल. अ रोटी, अ स्लाइस ऑफ ब्रेड. कभी मैं ट्रीट मूड में होती हूँ तो मैं खाती हूँ एक फ्राई अंडा और toast with butter because that is something I absolutely love. So इससे मुझे मिल जाते हैं मेरा फाइबर, मेरा प्रोटीन और मेरे कार्बोहाइड्रेट्स. अब हम बात करते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स की.
हर मॉर्निंग रूटीन में मैं आपको कहती हूँ कि एक एंटीऑक्सीडेंट जरूर लगाएं, जैसे विटामिन सी, नियासिनामाइड, रेसवेट्रॉल, ईयूके, व्हाटएवर, राइट। एंटीऑक्सीडेंट्स खाने भी चाहिए, तो उसके लिए मैं बनाती हूँ एक स्मूदी जो कभी कभी मैं ब्रेकफास्ट में ले लेती हूँ, बट यूजुअली ये मेरा मिड डे स्नैक होता है। और इसे मैं कैसे कैरी करती हूँ, दिस इज द सिंपलेस्ट थिंग यू कैन डू, इट विल टेक यू 1 मिनट लिटरली। एक केला बेचारा सा, पर यहाँ यूएई में समहाउ द बनानास हैव अ ह्यूज साइज, तो मैं आधा केला यूज करती हूँ। उसके अंदर मैं डालती हूँ कुछ फ्रोजन बेरीज, ये मिक्स है ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, इस सब का। बहुत अफोर्डेबल है, सुपरमार्केट में मिल जाता है। एक मिथ है कि जो फ्रोजन बेरीज हैं वो उतनी हेल्दी नहीं होती देन फ्रेश बेरीज। गाइस ऑनेस्टली फ्रोजन बेरीज आर एज हेल्दी बिकॉज वो अपने हेल्दीएस्ट फॉर्म में सोर्स पे फ्रीज की जाती हैं, सो दे आर फेयरली हेल्दी, दे आर एब्सोल्युटली चीप। आई हैव सम फ्रेश बेरीज ऑल्सो, बट आई ऑलवेज कीप फ्रोजन बेरीज। एंड फिर Amazon फाइंड, ये मुझे मिला था Amazon पे, इसे मैं ऑफिस लेके जाती हूँ। इसमें मैं इस पॉइंट पे थोड़ा सा केला काट के स्लाइसेस, बेरीज ऐड कर देती हूँ। ऑफिस में जाके ठंडा पानी ऐड करती हूँ 11-12 बजे, whenever I'm hungry, and then you just ये क्यों नहीं हो रहा, you do this। अभी मैं इसमें आपको स्मूदी बना के दिखाती हूँ। एक चीज और मैं ऐड करती हूँ, ऑप्शनल है, बट इफ यू कैन ऐड इट, इट्स ग्रेट। दिस स्मूदी इज गोइंग टू गिव यू ऑल द एंटीऑक्सीडेंट्स यू नीड। इट टेक्स लिटरली 1 मिनट। मेक इट फॉर योर फैमिली, मेक इट फॉर योर सेल्फ, इट्स हेल्दी। केले सुपर अफोर्डेबल हैं, फ्रोजन बेरीज आर अफोर्डेबल। It will not take you any time. You can just even make it in your regular mixie jar. But let me show you the one thing that I add, जो मैं इधर लाना भूल। So I'll add the photograph. ये है acai berry powder. This is something that I got not from Amazon. I got it from iHerb. Again, affordable. It's full of antioxidants. It's a high powerful superfood berry. इसका 1 चम्मच मैं ऐड कर देती हूँ। Now guys, जिस तरह से YouTube पे लोग वीडियोस बनाते हैं ना, दिखाते हुए इतना पॉलिश नहीं होगा। I'll just add stuff and आप देख लेना and then समझ जाना, because there is no rocket science in making a fruit smoothie, but let me show it to you. ये है मिक्स, इसमें है आधा केला, blueberries and strawberry. Now we're just gonna add some water. तो ये बन गई आपकी स्मूदी। इसे आप ग्लास में डालें, क्योंकि अभी मैं ऑफिस में नहीं हूँ तो कांच के ग्लास में पी रही हूँ। एंड या enjoy it, and I'm going to sip it while I shoot this video. So breakfast is important. अंडा, एक slice bread खा सकते हैं, खा लें, don't skip it। बहुत बार, and I'll be honest with you, I skip my breakfast, और जब मेरा breakfast skip हो जाता है, मैं लेती हूँ घर पे ही सिर्फ स्मूदी और boiled अंडा। Anything that will get me started during the day. Antioxidants are important, चेहरे पे लगाते हैं, बॉडी में भी लेना चाहिए। Super simple recipe, do try this. I call this my glowing skin smoothie. Thing that I do not every day because बोर हो जाती हूँ मैं, is overnight oats. मैंने Pinterest पे देखा था, basically oats milk, आप शुगर ऐड कर सकते हैं, मैं नहीं ऐड करती। चिया सीड्स, कोई भी फ्रूट ऐड करके एक कटोरी या बॉक्स में जितना भी आपको खाना है आप उसे फ्रीज कर दें। दैट्स ऑल्सो अ ग्रेट बेनिफिट, इट्स अ ग्रेट ब्रेकफास्ट विद लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स, क्योंकि इसमें आपको आपके कार्ब्स, फाइबर्स मिल जाते हैं। प्रोटीन के लिए ऑफ कोर्स यू विल हैव टू टेक समथिंग एल्स। सो पिक्चर मैं यहाँ डाल रही हूँ, आई डोंट फील लाइक मेकिंग इट, सो आई एम नॉट मेकिंग इट, बट यू विल गेट द जिस्ट, इट्स रियली सिंपल। सो ब्रेकफास्ट ऑप्शंस, सिंपलेस्ट ब्रेकफास्ट, अंडा बाई रोटी, अंडा और बॉइल्ड अंडा और टोस्ट। थोड़ा सा एक्साइटिंग मूड है तो फ्राइड अंडा। ऑल्सो डोंट फॉलो दिस लाइक कि आपको यही करना है, आप कुछ भी कर सकते हैं। बट वन थिंग आई विल टेल यू, there are a lot of other Indian breakfasts which I love. So I love poha, upma, besan ka chila, paratha, but they are high in carbs. Okay, they are high in carbs, and I don't have a big sense of portion control कि मैं बस इतना सा खा लूँ and I'll be done. No, I need to eat a lot of it. इसलिए वो मैं उस टाइप का ब्रेकफास्ट जो मैं genuinely enjoy करती हूँ, मैं खाती हूँ वीकेंड्स पे, हफ्ते में भी नहीं, I mean, महीने में 1 या 2 बार, because that is like my cheat meal or it's something that I want to do just to indulge. But ये basic सा by roti, boiled anda kind of a thing works really well. So this covers the breakfast options. Now let's quickly move on to lunch. अब आ जाते हैं लंच पे. So my lunch is basically leftover dinner from the previous night. So it's very simple. I like to carry rice at work because roti थोड़ी सी hard हो जाती है, reheating issues and all that. So I would basically carry a small bowl of rice, and when I say a small bowl, it would be basically half of this, right? So इसका
आधा हिस्सा rice with any kind of dal, any kind of chana, rajma, whatever, right? Some kind of a lentil which is high in protein, and then I would carry a salad. And a salad would be basically, most days पे बहुत sad salad होता है मेरा. It's like tomato and kheera and like basic Indian salad, nothing fancy. I'm not a salad person. I'm a junk food person who's trying to live a healthy life. So when I tell you this is possible, trust me, because I'm a person who loves Indian Chinese, who loves takeout, who loves McDonald's, and I can live on junk my entire life. And that is a fact. But my lunch is like pretty basic. So the one thing I completely hate, okay, and anybody who's watching this video right now who knows me personally will agree, I hate fruits. I dislike fruits in a way that you cannot even imagine. Yet, इतना सारा fruit मैं रोज खाती हूँ. So basically, ये आज की वैरायटी है, मतलब चेंज होती रहती है. Apple and pears are always in season here in Dubai, so that's always there. अभी आजकल I'm getting this powerhouse super सस्ता fruit which is bear, Indian jujube, which आप Google कर लेना इसके health benefits. It's crazy, and the one thing that it does is basically helps your gut health, and having a clean gut every single day is really important for good skin. So bear, ये 4 चेरीज बची हुई थी, so they are also here. मैं मुंह में डाल दिया, sorry. So basically इस तरह के टेक अवे वाले डब्बे में ये सारे फ्रूट्स आते हैं, and then I have to basically, मेरा टारगेट होता है कि मैं ये सारे फ्रूट्स खत्म करूं throughout the day. So whether I have it pre-lunch, post-lunch, anytime, pre-workout, whatever, इतना सारा फ्रूट मैं खाती हूँ. And I hate it. So I dislike fruits, but I have understood the value of the fiber, the sugar, and all the goodness that I get from them. So मैंने अपने आप को बहुत मुश्किल से train किया है to eat fruits every day. And ladies, when I'm telling you this, that you can do this, if I can do this, anyone can do this. Fruits are really, really important. They give you a lot of fiber. They keep you full. कितने हेल्थ बेनिफिट्स हैं आपको पता होगा, आपने वैसे ही देखा होगा यूट्यूब पे. सो आई डोंट नीड टू टेल यू हाउ इम्पोर्टेंट दिस इज, बट दिस इज द इजीएस्ट वे. सो जैसे कि मैं कह रही थी बिफोर द वीडियो गॉट कट, फ्रूट काट के रख लें थ्रू द डे. जस्ट मेक इट योर टारगेट दैट यू नीड टू फिनिश दिस फ्रूट. इट विल बी टफ. बहुत टाइम ऐसा होगा जब इतना सा फ्रूट आपका रह जाएगा, तो और जब मेरा भी रह जाता है बहुत टाइम पे, मैं एक उसको इस तरह के मिक्सी जार में डाल के स्मूदी बना के आई जस्ट गल्प इट डाउन, बट आई फिनिश इट बिकॉज फ्रूट फिर खराब हो जाता है and fruit is kind of expensive. So I just gulp it down, and that is something that I do, and I strongly suggest that start eating your fruits. That is going to it's going to just clear your skin out. And don't ask me ये कैसे काम करता है, क्या लॉजिक है, मुझे नहीं पता, but ये काम करता है. So try it out. Definitely. और कोई fruit नहीं तो दिन में एक बेर. And my dad got me onto this, okay? He's 76 years old. He is very conscious about what he eats, especially after my mom's death. He has taken on this massive health journey, trying to keep himself healthy for all of us, his children. And वो पढ़ते रहते हैं और मुझे बताते रहते हैं. And he got me onto having bear every day. And I'm telling you guys, it makes such a healthy difference to your overall gut health. Gut health, super important for good skin. So basically this covers my lunch, जो sad सा होता है, and covers my afternoon snack, midday snack, whatever. जो भी timing आपको करना है देख लो. I don't follow timings. I just set my food and then I finish it off. So that is something I do. Dinner के बारे में बात करेंगे, but dinner से पहले I'm going to talk about a salad. And it is really not a salad. It is basically one बेचारा सा गरीब vegetable, which is really, really important for all women, men, especially if you have dark circles, and that is beetroot. मेरे घर में at any given point in time आपको थोड़ी boiled beetroot हमेशा मिलेगी, because again like I said, I don't like fruits and vegetables. So मैं इसे रात को dinner के साथ as a salad I will just have 4-5 pieces. तो जब आपको beetroot खानी होती है, healthy खाना होता है, लोगों को लगता है कि बहुत सारा healthy खाना पड़ेगा. बहुत सारा healthy खाना नहीं पड़ेगा, आपको थोड़ा थोड़ा ऐड करना है अपने डाइट में. Whatever little you can do, because that is better than doing nothing. And because I've always had less iron in my blood, so consciously last 2-3 साल से I have been eating iron rich foods just to make sure कि naturally मैं उसको ऊपर लेके आऊँ rather than having to take iron supplements. And beetroot is a powerhouse. It is an antioxidant.
कुछ लोग उसे God's natural sunscreen भी कहते हैं, but I don't know about that. It is a natural antioxidant. It's very, very high in iron. It is amazing, 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 amazing. And this is something that you should incorporate. Like I said, just get a kilo of beetroot, 2-3 ubal ke rakh do, and just have it in your salad with your dinner or whatever. Now my dinner is really, really simple. I'm a rice eater. Most days I eat rice, and my measurement of rice, like I told you, it is this katori, but ye bharni nahi chahiye, so it is like half of this. I'm putting the egg back. So it is basically that with any kind of dal. There are lots of dals. I'll show you my pantry right now. Bahut sari dal hoti hain. But one thing that I'm completely obsessed with, and I know I'm going to sound like everybody's mother, is hari sabzi. And even right now, on my kitchen counter, you can see ye kya hai? Palak hai. Palak, oh sorry, palak kati hui padi hui hai yahan pe, kat ke dho ke padi hui hai before I'm going to cook it or freeze it or whatever. Palak, methi, anything green is what I have. Abhi sardiyan chal rahi hain. Just last week I managed to get saag in Dubai, which is kind of tough to get. So I managed to get saag, bathua, all of those things. So at least 2-3 times a week there is a lot of green leafy vegetable being made. Aise bana lete hain, paneer ke sath bana leti hu, whatever. But greens are a huge part of my life. Again, antioxidants, iron, fiber, variety of minerals, it's very important. So greens hoti hai. Otherwise there's whatever, you know, like gobi, bangan, the regular Indian food is tarah ki cheez hoti hai. Of course, there are days when I do some kind of baking and continental cooking. I love pasta, but I've left it. I've not had pasta now for at least 2 months. The last time I had pasta was when I was at a business lunch somewhere. So yeah, so I've left all of that, but I would just do a grill and things like that. Jab mera Indian khane ka mood nahi hota, because so basically I can't eat Indian food every day, so I will do some alterations ki kisi din chicken kha liya aise bake karke ya grill karke ya just tandoori style or whatever, and that's how I get like my protein. But in general, I always, when I am looking at my food, my basic goal is ki usme kya kya hai, and us kya kya mein protein, fiber, carbohydrates hone hi hone chahiye. Minerals and antioxidants बाकी आपको fruits and vegetables से मिल जाते हैं. So this is my thing to you guys, that definitely incorporate some of these changes into your lifestyle. And some of the healthiest food is actually very, very affordable. Beetroot, very affordable. Bear, super affordable. Bananas, affordable. Frozen berries, depending आप किस time पे ले रहे हैं, offer पे ले रहे हैं, नहीं ले रहे, they are also very, very affordable. So these are things that you should have. In addition to that, one thing that I do have, because I do strength training, which is with weights, I have protein shake, but I don't think everyone needs to have it, but I will still show you what is it that I have. So this is the protein shake that I have. This was recommended to me by my trainer. ये choco mint flavor है. कोई भी flavor खा सकते हैं. All of them honestly taste like shit. So doesn't quite matter, but yeah. So this is something that I have in the morning with my breakfast, and in the evening pre-workout and stuff like that. But this is obviously totally optional. I am taking this because I'm strength training. Otherwise, you don't need to. So this basically covers breakfast, lunch, dinner, all of the goodness, all of my fruits, which I now need to obviously finish through the day. Even though I'm at home, I will eat my fruits through the day. But now let me show you multivitamins, because that is a huge part of your health. Food से हम कितनी भी कोशिश कर लें, there is not everything that you can get. So you need your multivitamins, and I'm going to show you some of them. So a really important thing, like I said, is multivitamins. If you're in India, let me recommend to you one thing that I was taking for a long time. I'm on a break and I'm taking something else. वो भी मैं आपको दिखा दूंगी. Is Supradin. Supradin is one of the most affordable multivitamins. It is still controlled by the medical authority. Like it's not, इसको अभी तक न्यूट्रिशन में आने नहीं दिया है, which is why इसकी प्राइस बहुत affordable है. It is a controlled price. I have compared the ingredients of Supradin to an American multivitamin जो मैं पहले लेती थी, which is called One a Day for Women, and the ingredients are almost identical and price difference is huge. ये आपको इंडिया में Amazon पे मिल जाएगी, pharmacies में मिल जाएगी. Get this multivitamin. If you're just taking one of this every day, you're good. Right now, because I'm strength training, my trainer has recommended to me a whole bunch of things जिनकी picture मैं screen में डाल दूंगी. But basically, this is my dabbi of multiple small dabbas where I have all of my multivitamins. So basically, I take vitamin C in the AM after breakfast, followed by zinc after breakfast. So vitamin C and zinc is what I take in the morning
आफ्टर ब्रेकफास्ट. एक प्रोबायोटिक टाइप का एक कैप्सूल है which is for gut health, but I also take bear, but I'm still having this right now. I'm just trying to follow everything that has been recommended to me. So एक probiotic before lunch, magnesium and omega post dinner. और इसमें दो चीज़ें हैं जो मैं अभी नहीं ले रही. One is a collagen supplement, a new one that I'm trying, because as you know, if you know me, I don't believe that collagen supplements work. Having said that, I'm trying out a new brand which is here, which I'm not having because बहुत सारा चीज़ हो जाता है. And carotenoid complex. This is something I take a few times a week. So basic, these are my multivitamins. And जब मैं ये सब नहीं ले रही होती हूँ, मैं लेती हूँ मैं क्या लेती हूँ? मैं लेती हूँ Supradin. And once in a week, I take a high quantity sachet of vitamin D3 because vitamin D3 की कमी almost सब में होती है, and that is super important not just for your hair health and your skin health, but also your general mood. If you have vitamin D deficiency, you're going to be cranky, bitchy, and very, very sad. So get your levels tested if you haven't already. But these are pretty much the supplements I take. So guys, I think that is pretty much about it. Like this is my, let me just read my notes because मैंने सब लिखा था. I forgot. I have to tell you about the oils I use because खाना तेल में बनता है, and I also wanted to show you like a little bit of the pantry. I'll just see how I feel about it. But basically there are 3 types of oils that I use in my house for cooking. So speaking of oils, like I was saying, it is just basically your family heritage, right? How you've been raised, क्या चीज़ें पहले की जाती थी. Somehow organically I'm also following that. So mustard oil is used quite a bit in my household. So जैसे काले चने बनते हैं, they are made in mustard oil. मेथी, भिंडी, इस तरह की हरी सब्जी is also made in mustard oil. घी में सब जो दाल होते हैं उनके तड़के घी में लगते हैं. Even if I'm using 1 teaspoon and literally 1 teaspoon of oil, but that is desi ghee that I will use for tadka. In addition to that, olive oil, mustard oil, ghee. हाँ, यही 3 है. The regular frying cooking oil, I used to get it and I still get it अगर घर में कोई party है and I need to fry stuff. But there is literally no frying that happens in my house. I have an air fryer that I bought in January of 2022. Used it 3 times and उसके बाद वो ऐसे पैक होके ऊपर पड़ा है. So there is no frying. अगर मुझे कुछ फ्राइड खाना होता है जैसे आलू टिक्की और a चाट, I'm not doing it at home. मैं बाहर जाके ही खाती हूँ. So there is no frying oil per se. But mustard, olive, ghee, these are the 3 types of oils that I use and I think they are healthy, but you can do what you want. ऑयल्स की बात हो गई है, अब ग्रेन्स की बात कर लेते हैं. सो लाइक आई मेंशन इन द वीडियो, आई एम अ राइस ईटर. आई लव माई राइस. ओके, राइस जिस तरह से पकाई जाती है, सो बेसिकली हम उसे उबाल के बहुत सारे पानी में उसका स्टार्च छान लेते हैं. अदरवाइज इट गेट्स वेरी वेरी हैवी. कैलोरिफिक वैल्यू में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट इन जनरल फॉर योर स्टमक टू बी एबल टू डाइजेस्ट इट, rice जिसका starch निकाला गया है, that is something I use. Obviously, I think from a collagen perspective, that's not a great thing because आपने सारा starch फेंक दिया, but from a health perspective, that is what I do. तो जो चावल होते हैं उसका पानी निकाला जाता है, and that's how I eat my rice. That's number 1. आटा, normal आटा, जो भी आशीर्वाद or whatever we get here, that's the आटा I use. But in addition to that, अभी जैसे मौसम अच्छा हो गया है, UAE is a very very hot country, you all know that. So we cannot eat different types of आटाज during the summer. But अब जैसे मौसम ठीक हो गया है, we're in the 20s, I like to incorporate मक्की का आटा and ज्वारी का आटा. एंड इसकी रोटियां बहुत अच्छी बनती हैं. मुझे बनानी नहीं आती, माई हाउस हेल्प मेक्स इट बिकॉज वो बनाना थोड़ा मुश्किल सा होता है, बट शी मेक्स इट वेरी नाइसली. एंड जवारी एंड मक्की इज़ रियली गुड. सो अगेन गट हेल्थ इम्प्रूव करता है. इट कीप्स यू फुल फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम. स्पेशली जवारी की रोटी, आई रियलाइज इफ आई हैव लाइक 1.5, then मुझे like घंटों तक भूख नहीं लगती. In fact, I'm not even able to eat my fruits that day because I'm just so stuffed. It's really heavy, but it's filling and it's a great source of fiber and minerals. So I would really suggest that आप अलग-अलग टाइप के आटे के साथ भी experiment करें if you're a roti eater. And rice is normal rice. I have quinoa and all of that at home, but I don't like it, you guys. मतलब मैंने ना 2 साल पहले quinoa बहुत खाना शुरू किया था because health kick and all of that. And I used to try and replace rice with quinoa and have like dal and quinoa instead of dal chawal or like chicken curry or mutton curry.
चिकन मटन फिर भी किनोआ के साथ खाया जाता है बिकॉज आई थिंक इट्स टेस्टी, बट दाल एंड किनोआ इज लाइक super sad, so I don't do it. I still use quinoa if I'm making a nice salad, or if I'm using it in a Western recipe. Quinoa is beautiful. इंडियन खाने के साथ मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, एंड बेसिकली कैलोरी वैल्यू में बहुत कम डिफरेंस है. सो बेचारी राइस ने क्या कहा है, हैव योर नॉर्मल राइस, जस्ट ईट वट एवर यू वॉन्ट, ईट इट इन मॉडरेशन. And yes, once in a while you should binge and you should eat what you really like. And if you want to just know what is my ideal food, अगर मैं ये सब नहीं करती तो मेरा ideal खाना क्या होता है मैं भी बताती हूँ आपको. So in an ideal day, अगर मुझे अपने diet, health, skin, general health actually के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, I will tell you which is my ideal breakfast, lunch and dinner. So of course my day will start with cold coffee, and then I would, because I'm a Punjabi girl, I love my parathas. I would actually have gobi, methi, aloo, whatever. I would have a paratha, and मैं एक पराठा कभी नहीं खाती. I would have 2 or 3. अगर मैं पराठे नहीं खा रही हूँ, I would have like scrambled eggs with a lot of cheese, or I would have अंडे की भुर्जी which is made in a lot of ghee. Those kind of things, right? Pancakes बहुत पसंद है मुझे, which I've not had for over 6 months, and honestly I'm not even missing it at this point. Lunch would be like a nice heavy big portion of rice. I love my rice, so biryani, rajma chawal, kadi chawal, something like that. Dinner would be a pasta, pizza, Chinese takeout, something like that. And I don't do this. 90% of the time my diet is very regulated. 95% of the things that I eat in a day are healthy, and agar maine binge kar liya with little bit of kurkure or a little bit of chocolate, that would be like 5%, right? Like most of the day I try and maintain a healthy diet, not just for my skin but my overall health, because I am 36. I'm going to be 37 in January, depending when you're seeing this video. So yeah, 2023 January I'm going to be 37 years old. I'm not young anymore. There's a lot of abuse that my body has taken in terms of my unhealthy lifestyle, which I'm trying to reverse. And it is not difficult, but one thing that I will, अगर आप इस पॉइंट तक वीडियो देख रहे हैं, so one thing that I will tell you is that don't try and do everything together. वीडियो देखने के बाद सीधा स्मूदी, हरी सब्जियां, beetroot, don't try and do all of that. You will get overwhelmed, you'll get bored, and you'll end up wasting food because you'll not be able to consume all of it. एक, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ स्किन केयर में, एक एक चीज़ से शुरू करें, एक एक हेल्दी चीज़ से शुरू करें, and just make it a part of your lifestyle to a point that you will just completely enjoy it. And then like once in a month or once in 2 weeks, when you go treat yourself, you will feel good about it and you will enjoy it. A big thing that I haven't spoken about, which I want to speak about, is my addiction to thumbs up. If you guys follow me on thumbs up, if you guys follow me on TikTok, and you've seen me in my lives, I used to always be sipping thumbs up. It's been almost a month and a half. I've not had thumbs up at all. My addiction was at a level that every single day I had to have 1 can, which is 300 ml. And it was an addiction because if I was not having it, I was in a bad mood. I was feeling cranky. I was feeling just bad. And I just took it on myself कि जिस तरह लोगों को अलग तरह की addictions होती हैं, this is also an addiction, and I have given it up. And yes, it's been a tough journey. So if you have any of these habits, if you feel you're dependent on some kind of a food item, try giving it up. So as you would have seen, my diet is very simple. It's not complicated. It's not even fancy. It's very, very basic. All I try and do is incorporate things that are healthy for me, and that is about it. It's a small lifestyle change that I make. If you enjoyed this video, let me know in the comments below. Also, let me know what is the other kind of content related to beauty that you would like to see on my channel, not challenge. If you haven't already, do consider subscribing. I will see you in the next one. Take great care of yourself. Bye.